my Miss A Passion of Being a Writer, Miss Niharika ma'am. Before starting today's event, there are some ground levels which the participants need to obey and follow them. First, feel free to drop your questions in the chat box. We will answer every question in the end. Second, every participant is requested to keep their mic mute. And lastly, a feedback form will be shared in the chat box. Now over to you, ma'am. Thank you, Gargi. Thanks a lot. So yeah, any one of you who can turn on their cameras, that would be really appreciated because we can have an one-on-one interaction then. Otherwise, if you're not comfortable or you're not in a place where you can turn on your cameras, I understand. That's perfectly fine. Yeah. So hi, first of all, let me welcome all of you. Ankita, Ashish, Anjali, Sujata, Payal, Namneet, Isha, Soumya. Hi, Abhishek, and Shreyanshi, Mukhlisha, Ankshika. If I pronounce your name wrong, please correct me in the chat. Okay. Shaurilu, Jyot, Naman, Ritu, Suchita, Arpita, Mandeep, and Shruti. Thanks a lot for being here. And it means a lot that you have taken out time from your, so much hectic life that we hardly have time for anything. And if you're taking your time, an hour for something like mental health, then I understand that you value what you are and what you're going to be. I'm really grateful for all of you to be here. So first of all, I don't want it to be a very formal session. I don't want it to be something like you studied something, you found out about something and you went and forget about it. It's not. It's just an interactive session where we want to talk about things that maybe I have faced, maybe you are facing, and maybe you're going to face. So I just want to tell you about those things, and we will talk as friends and we'll understand that what mental health is actually is. Right? So if you have a pen and paper, drop it. You don't need that. It's just an interactive chat session, and that's what we are going to do. So I just want to start it with one quotation because I don't have any presentation or anything for you because it's a one-to-one discussion with so many people. But yeah, I just want to share a quote with you guys. Give me a moment. Let me share my screen to you. Yeah. So see, 1 second. Yeah. Can you see it? So basically, self-care is not selfish. You cannot serve from an empty vessel. And that is what we believe as anyone who wants to improve their life, anyone who wants to change their life, anyone who is, constantly thinking about certain things that they don't even know what's happening with them. It's for all of you. It's not for someone who is just suffering from severe depression or some anxiety and all that. It's not only for those people. Obviously it is for them too, but it is not just for them. It is for the people who have struggles in their daily life, who have smallest struggles जो हम लोग acknowledge भी नहीं करते हैं. Is it fine if I talk in Hindi in between? Can you just comment down that? Just a second. Yeah, I'm sorry. 1 second here. I'm right. Yeah. 1 second, guys. I'm little, not quite sure with Zoom. Just a second. Yes. 1 second. Huh? I'm a mess. See, this is what we're talking about, that anyone can be a mess. Let me just do one thing. Let me stop sharing my screen. Okay, sorry, here. Okay, I'm more into a Google Meet and all that. I don't use Zoom. Sorry for that. But yeah, so basically what we okay, all of you, good afternoon. And yeah, so basically it's not for anyone who's just going through depression or have severe anxiety. It's not just for them. It's for the people who are living their daily life. And it's for them who have smallest struggle, जो लोग acknowledge भी नहीं करते. Are you guys comfortable with Hindi in between? Can you comment it down? Just add in chat if yes or no, whatever. If you're comfortable, I'll start with Hindi because it goes a mixture of both Hindi and English. So if you're not comfortable, keep talking in English. So yeah, so basically ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. It could be the positive, it could be the negatives, जो छोटी छोटी होती हैं, जो हमारे लिए बहुत छोटी होती है, but हमारे लिए छोटी नहीं होती, दुनिया के लिए बहुत छोटी होती है. और हमें लगता है कि why should we discuss about it, why should we even talk about it. लोग हमें पागल समझेंगे. लोग समझेंगे कि it's just
us who is going through it. So that's not the reality. What mental health actually is about the problems that we face, about the smallest problem that we face while living our life in the most common way. जरूरी नहीं है कि आपको एक बिजनेस ही रन करना है तभी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या अगर आपको एक कुछ आपने एक ऐसी जॉब ले ली है जो आपको शायद अच्छी नहीं लग रही है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट. यू कैन बी इन स्पेसेस वेयर यू आर comfortably fine and still not feel good. So that is what we are going to talk about. That is what we are going to talk about, because that's the problem that we all are facing in this generation. हमारे साथ हो क्या रहा है? We have a lot of information going on. We have so much information at exposure. हम घर बैठे बैठे इंजीनियर बन सकते हैं. I mean, not the certificates and all, because now the value of certificate is not, you know, no, not anything anymore. Elon Musk even said it, that he became a rocket science engineer only studying online, right? So the world is changed completely. तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब हमें मिल रही है, then how are we supposed to handle with it? हम तो अभी भी वही लोग हैं, हमारी जनरेशन वही है जो स्कूल जाती थी, हमें कॉपी पेंसिल में काम मिलता था, we used to do it and we would be happy about it. And suddenly the generation is changed, that everything around us is changed. We don't know what to do. We are trying to cope up with it. We are trying to be these social media stars. We are trying to be everything that we can, but there's something that's missing between all of this. And that is our mental peace. We are not able to understand what's happening with us. What should we be doing? हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं? हमारे साथ वो प्रॉब्लम बहुत हो रही है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. आप पेरेंट्स डिडंट हैव दिस सो मच कंपैरिजन. उनका कंपैरिजन गली में जो लोग थे 4 5 10 में, या कोई शहर के आसपास के जो लोग थे उन्हीं से होता था. आज हमारा कंपैरिजन हो रहा है. आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सब, ऑल यू सी इज कि एक 16-year-old इज मल्टी मिलियनियर. आप क्या कर रहे हो? आप तो कॉलेज जा रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठ के पैटीज खा रहे हो, या आप कैफेटेरिया में एंजॉय कर रहे हो. दैट्स व्हाट यू गाइज आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. बट कोई और कुछ कर रहा है और उसका इम्पैक्ट, एक मुंबई में बैठा बंदा कुछ कर रहा है, उसका इम्पैक्ट एक बिहार के किसी छोटे से गांव में बैठे लड़के को या लड़की को पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि ही सॉ दैट अरे ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, या व्हाट्स रॉन्ग विद मी पर्टिकुलरली. So it's not about that. It's nothing that you're not doing correctly. It's about what you can do and where you are. अगर आप जहां हैं आप वहां पे अपना बेस्ट कर रहे हो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, then I think your job is done and that is the satisfaction that we're looking for. But वो मिलता नहीं है obviously. क्यों? क्योंकि हमारे पास comparison के लिए बहुत सारी चीजें हैं. आज हम 50 लोग एक साथ हैं. क्यों? क्योंकि there's so much information available. We circulated things, but we don't know even each other. We don't know anything about each other, right? तो अब क्या होगा? आपने मुझे देखा, मैंने गार्गी को देखा, या अभिषेक को देखा, या किसी को भी देखा, I will think कि wow यार, everything is so sorted. I wish I had that, right? This fear of missing out, this fear of not having things that we want, we see in others' life, the fear that someone else might have something better than us. And ये मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कह रही हूँ. ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत बुरे लोग हैं या हम बहुत नेगेटिव लोग हैं कि हम एनवी करते हैं लोगों को, हमें बुरा लगता है कोई और सक्सेस कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स कंप्लीटली नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट द कंडीशनिंग दैट आवर ब्रेन हैज. इट्स अबाउट व्हाट आवर ब्रेन कैन, यू नो, जब हमारा ब्रेन किस चीज को अडेप्ट कर पाता है उससे ज्यादा हम उसको इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं राइट नाउ. एंड obviously the brain is meant in a way that it competes with itself, it competes with other people. And that is what I want to tell you, that mental health issues can be with any one of you, anyone anywhere, having everything sorted in their life. तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है. हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि पहले हमें ये समझना है कि what is mental health. What is mental health? I can be doing everything perfectly in my life. I take care of my business, I take care of my personal life, I take care of my family, I take care of my finances, I take care of XYZ, everything, right? But there could be something that is missing from my mind, so something from my life that I don't know what's happening with me. तो वो है हमारा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम. जब हम अपनी सब कुछ चीजें करने के बावजूद भी कुछ ऐसा फील करें कि कुछ मिसिंग है या कुछ हो नहीं पा रहा है, तो those are mental health troubles that we are talking about. और ये
सब कुछ सिर्फ सिवियरिटी पे नहीं है कि मुझे डिप्रेशन अगर क्रिटिकल होगा, सिवियर होगा तो ही इसको मुझे ठीक करना है। अगर मुझे एंजाइटी, हाई लेवल एंजाइटी होगी तो ही मैं उसको करेक्ट करवा सकती हूँ, या मैं बात नहीं कर सकती हूँ उसके बारे में, या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्या, बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथली, हाउ कैन इट बी रॉन्ग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी happening with anyone sitting in this room, anyone, even if they have everything, and even if they don't have anything, they could be peaceful and sound. So वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतना होता है कि जब हमें दिस आइसक्रीम वाला गाय, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो बट द प्रॉब्लम इज ओनली दैट हम क्या करते हैं, जब हमें बुखार होता है तो हम अपने पूरे परिवार को बताते हैं कि शिट मुझे फीवर, सॉरी आई एम सॉरी फॉर द माय लैंग्वेज, दैट मुझे बहुत तेज फीवर हो गया है, आपकी फैमिली आपके पास होती है, एवरीवन इज अराउंड यू, राइट? But when you feel like that, when you feel something is lost from you, when something is not right within you, you don't tell even your best friend. You think कि यार क्या सोचेंगे ये लोग, why should I tell you? तो that is the notion that we want to break here. क्यों? क्योंकि आप बीमार ही हो, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देर आर डिफरेंट, जैसे हमें बुखार होता है, हमारा पेट दर्द होता है, हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट कॉमनलाइज इसको, हमें एक तरह से इतना कॉमन करना है, वी टॉक अबाउट इट विद आवर फ्रेंड्स, वी टेल आवर फ्रेंड्स दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड, देयर इज समथिंग दैट्स नॉट हेल्पिंग मी। आपके दोस्त बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। You know that there's something wrong. You tell them again, no, there's something wrong and I need to change it, I need to correct it. जब हम ये एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं, जब ये मान लेते हैं कि हाँ हमारे साथ कुछ गड़बड़ है और हमें उसे सॉर्ट करना है, देन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इज जस्ट लाइक ए फीवर। जब हमने उसकी टेबलेट ले ली तो आज नहीं तो कल वो ठीक हो ही जाएगा, राइट? So that's the only thing that we have to do. First of all, we have to acknowledge the fact that we have problem. And ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, मतलब आज जिस सिचुएशन में हम हैं, जो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस सिनेरियो में वी आर टॉकिंग, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वी आर कंपीटिंग विद, लाइक मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम कंपीटिंग, और दिमाग में हमें सुबह अगर हम काम कर रहे हैं पूरा दिन और एक न्यूज आ जाती है कि 12 ईयर ओल्ड मल्टी बिलियनर है, वो रिटायर कर चुका है अब 12 साल की उम्र, तो आपका दिमाग कहता है अरे यार मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया अभी तक, आई एम 22, आई एम 25, आई एम 19, आई एम 80, व्हाटएवर। तो हम लोग को लगता है कि दिस इज ओनली द वे ऑफ लाइफ एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड इट। हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, मे बी आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं हो सकता, आपका खाने का पैटर्न ठीक नहीं हो सकता, या आपकी हैबिट्स सही नहीं हो सकती, दोज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। ओनली वो प्रॉब्लम्स आप बाद में डील कर सकते हो, आप उनको ठीक कर सकते हो, बट आप इस सिनेरियो में जहां कंपैरिजन हो रहा है आपका चीजों में, उसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट द टाइम फ्रेम, इट्स जस्ट द सिचुएशन जहां दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे से लोग आगे भी जाएंगे, कुछ पीछे भी रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा कंपैरिजन बहुत हाई लेवल पे हो रहा होगा हमारे दिमाग में, उनके दिमाग में पता नहीं, क्योंकि उन्हें शायद वो हमें जानते भी नहीं हो। आई डोंट नो कि ये साइकिल ऑफ लाइफ कैसे चलता है, हमें नहीं पता ना किसको देख के कैसा फील कर रहे हैं। We don't know how we are feeling, right? So it just happens to us. It's all here. It's all the system that's working in there. All we can do is change our things that is on our control. जो हमारे कंट्रोल में है हम उनको वर्कआउट करते हैं, अल्टीमेटली वो जो यहाँ है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम इज, जब तक हमें प्रॉब्लम का एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा हम उसे आगे ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये एक्नॉलेज करना है कि हाँ हमारे साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। अब किस तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है? देयर आर लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट कुछ बहुत माइन्यूट होती हैं, जो सिर्फ जिसको हम बोल देते हैं कि आज मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी, राइट? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ, आज तो मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा। सो ऑन दोज डेज it's okay, leave it wherever you are, don't do whatever you're supposed to do, just give yourself the time you need. It could be your body fatigue, it could be anything that your body is going through. Your body just needs some time, it just need it's going through a lot every day. We do a lot of stuff, हमें पता भी नहीं चलता है, जब हम फोन पे 50 रील देख चुके होते हैं, our body has simulated a lot of time. हम कभी मुंबई में होते हैं, अगले टाइम हमें ऋषिकेश की वीडियो दिख जाती है, तब हम ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट सेकंड हम कुछ खाने का देख रहे होते हैं, हम दिल्ली में होते हैं, देन सडनली वी आर इनटू लंदन, और फिर उसके बाद हम पेरिस में होते हैं।
सो सी, हमारे दिमाग में साथ में वो इमेजिनेशन चलती है. इट्स नॉट जस्ट कि हमने वो वीडियो देखा और वहीं छोड़ दिया. वी एक्चुअली गो टू दोज प्लेसेस. अगर आप नहीं गए हो तो आप इमेजिन करते हो कि अरे हाँ ऐसा होगा अगर मैं जाऊंगी तो. सो it's all about that. Our mind is continuously working, continuously, exhausting itself. और हम उसके लिए उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम सोते हैं. कब? रात को 3 बजे. जब हम रात को 3 बजे सोते हैं, आ स्लीपिंग पैटर्न इज ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड. ये मैं मेरे रेफरेंस में भी बात कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऐसे मतलब सॉर्टेड जिंदगी जीती हूँ, बहुत सब कुछ मुझे इतना सब मतलब पता है. ये मैं पढ़ रही हूँ, ये चीजें सीख रही हूँ. इट्स ऑल अबाउट दैट. बट गलतियां हम सब में हैं. हम सब उन चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड होती है. एंड धीरे धीरे जब आप वो चीजें बार बार रिपीटेटिवली कुछ टाइम के लिए करते हो, देन इट बिल्ड्स इनटू अ हैबिट. एंड जब वो हैबिट बन जाती है तो वो आपको एक तरह से डैमेज करने लगती है आपके साइकिल को, आपके नर्व्स को, आपकी चीजों को. और फिर आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं. शुरू शुरू में अगर हमें समझ आने लग जाता है कि नहीं, this is not just, I'm not just feeling boring or anything, I am feeling something different than what I'm feeling. I am feeling this continuously. मुझे हर रोज लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये. एंड वो जो बेसिक जो होता है ना कि जिससे हमें लगता है कि अरे नहीं, मुझे नहीं करना है अपना काम, या आज छुट्टी ले लेते हैं. that's what we humans are about. पर उसके अलावा जब एक बिल्कुल भी अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की, आपको लगता है कि मेरा शरीर इज नॉट एट ऑल सपोर्टिंग मी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. वी ऑल हैव दोज टाइम्स जब हमें लगता है कि नहीं, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, आई एम नॉट एबल टू डू इट. यू इवन ट्राई, यू पुश योर माइंड कि हाँ मुझे करना है, आई एम सपोज टू डू इट एंड आई वांट टू डू इट. फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर आर समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू. देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू करेक्ट इन योर लाइफ. एंड दैट कुड बी एनीथिंग. आई एम नॉट वेरी आई कैन नॉट जस्ट से कि वो सिर्फ मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है. इट कुड बी अ फिजिकल हेल्थ इशूज, कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप चल नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको फिजिकली फिट रखे, तो वो भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. बट प्रॉब्लम इज, ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू फिगर आउट व्हाट्स बॉदरिंग अस. वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब हम इसे करें कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट्स बॉदरिंग अस, राइट? सबसे पहले ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मैं तो आज यहाँ पे हूँ और कल वहां दुनिया में कुछ और हो रहा है. मैं अभी कुछ सीख रही हूँ, मान लीजिए मैं कोर्स कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग समथिंग. जैसे आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, राइट? तो मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन दुनिया तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है. कभी चैट जीपीटी आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, कभी दुनिया में कुछ और हो रहा है. कोई $multi-million कंपनी बना रहा है, कोई यूनिकॉर्न बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है. एंड व्हाट आई एम डूइंग नथिंग. ये जो फियर है मिसिंग आउट का, इसको हमें कंट्रोल करना है. We have to control this fear. How can we control it? We have to accept the fact कि दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है. And what you can do is you can have your skills with it. आपके हाथ में अपनी skills है. You add your skills into your life. जितना आप अपने लेवल में बेस्ट कर सकते हो. ये नहीं कि जो सामने वाला कर रहा है आपको वो करना है. शायद गार्गी को कुछ और करना था, लेकिन उसने मुझे देखा कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, तो she felt like okay, I want to do this, right? There's nothing wrong in it because we all humans are meant to be switched. And हम इधर उधर switch कर सकते हैं. It's very easy for us to mold ourselves. But problem is कि हमें वो नहीं करना है. We don't need another Niharika. We need Gargi, right? We need her to be who she is. We need her to explore her side. We need Ankita to be what she wants to be. किसी और को देख के हमें हमारे aspirations, हमारे goals, हमारे dreams change नहीं करने हैं only because हमें लगता है कि शायद वो चीजें जो उनके पास है वो हम मिस कर देंगे. तो this fear of missing out हमें हटाना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से रिलेटेड जो हमें चीजें करनी है उससे रिलेटेड स्किल सीखनी पड़ेंगी. इफ यू वांट टू बी अ फोटोग्राफर, लर्न थिंग्स रिलेटेड टू दैट. इवन इफ द वर्ल्ड चेंजेस. आज जैसे हमें लग रहा है कि आज जो चीजें हम कर रहे हैं उनका कुछ रेलेवेंस ही नहीं है, कुछ चीजें बदल रही हैं, पढ़ाई बदल रही है, सब कुछ तरीका बदल रहा है, डिग्री की वैल्यू नहीं रह रही है, XYZ बहुत सारी चीजें हो रही है, राइट? बट किसी एक चीज की वैल्यू रहती है, वो होती है हमारी सीखने की हैबिट की. हमें ये नहीं सीखना है कि कोई स्किल हम सीख लेते हैं तो उससे हमें ऐसा लगता है कि अब हमने सीख लिया एंड डन, अब हमारी लाइफ सॉर्टेड, हम यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. इट्स नॉट. वी हैव टू लर्न द हैबिट ऑफ लर्निंग. आई मीन this seems very difficult to understand, but it is actually. हमें नई स्किल्स इसलिए सीखनी होती है कि जब भी कुछ भी दुनिया में बदले, we are the person who is
सो मोल्डिंग, कि हम अपनी नई स्किल को सीख सके, क्योंकि हमें तो सीखने की आदत है। आज आप हमें ये सिखा दीजिए, हम कल कुछ और सीख लेंगे। दैट हैबिट, दैट इज समथिंग दैट वी विल वांट टू लर्न। दैट हैबिट इज समथिंग दैट वी रियली वांट इन अ लाइफ, जो हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचा सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आज आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो और आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, लेकिन आपको कल कुछ और की जरूरत पड़ी, तो आप वो सीख सकते हो, क्योंकि आपको सीखने से डर नहीं लगता है। तो हमको वो करना है। और जब आप ये मन में आपके हो जाएगा दैट यू नो दैट यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो आपको किसी चीज से कंपैरिजन की डर ही नहीं लगेगा, बिकॉज यू नो कि दुनिया में कितना भी बदलाव आ जाए, मैं सीख के कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, राइट? तो दिस हैबिट ऑफ लर्निंग टू लर्न, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमें सीखनी है, ये एवरी वन ऑफ अस इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन दैट आई एम टॉकिंग, जो जो 20s to 30 के बीच में इस टाइम पे जो लोग हैं, क्योंकि हमारे 20 हमारे से पहले वाली जनरेशन में बहुत कुछ चीजें अलग थी। They didn't had this much exposure, they didn't had this much opportunities and things to be actually available. उनके पास नहीं था कि वो घर बैठ के भी काम करके पैसे कमा के चिल कर सके या अपनी लाइफ को जी सके, बट वी हैव दोज अपॉर्चुनिटीज, वी हैव दोज थिंग्स। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चेंज आ गया है दुनिया में, क्योंकि हम आए कहाँ से हैं, जहाँ पे 9 to 5 या काम करने के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ता था। अब हो क्या रहा है, हम घर बैठ के भी या कहीं पे भी बैठ के, पहाड़ पे बैठ के भी हम काम कर सकते हैं। So we are the generation who's actually seeing a lot of change, a lot of disruptancy basically. But पॉइंट इज, तो हम इस सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, हम कैसे अपने मेंटल हेल्थ को, अपने दिमाग को सॉर्टेड रखें कि हम इस सब को झेल पाए। ऑल वी हैव टू डू इज टू लर्न, कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं मान लीजिए एक राइटर, आई लाइक टू राइट, बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, there are apps that are using that can easily write what I write after 2 hours, तो I want to learn the habit कि मैं उन apps को कैसे यूज करूं, right? I want to learn that. आपको बस याद मतलब आपको सीखने की जरूरत है, आपको चीजें सीखते रहना है, तब आपको चीजों से डर नहीं लगेगा। जब आप अप टू डेटेड रहेंगे चीजों के साथ, जब आप चीजों के बारे में जानते रहेंगे या अपने अपने बारे में आप अप टू डेटेड रहेंगे, तो आपको दूसरों से प्रॉब्लम नहीं होगी। आज अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं, तो अगर मैं आज इस सेमिनार में आप लोगों की जगह होती, या मतलब मैं सुन रही होती, तो मुझे ऐसा लग रहा होता आई हैवंट डन एनीथिंग इन माय लाइफ, मैंने तो बस कॉलेज किया, ये किया, इनसे बेटर तो मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी। आई वाज अ डिफरेंट पर्सन, एवरीवन इज अ डिफरेंट पर्सन व्हेन दे ग्रो, राइट? तो हमें क्या करना है, आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू नॉट बी देयर वेयर आई वाज, क्लूलेस, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों के साथ आई डोंट वांट टू ग्रो अप। I don't want you to look back after 5 years and say, shit, I was not the person that I want to be now. I really want you to change that now only, because you have the right time. You are in the generation and you are in the time frame when you can actually have so much exposure and you can do a lot of things about it. All you want, I want you to understand is कि आप अपने आप को समझो. You have to understand yourself. The day you understand yourself, the world is yours. Trust me on that. I'm not saying you will be next Mukesh Ambani or anything. I'm not saying all of that, because आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते. That's completely what you are going to do and what's going to be your future. It's not about that. But what you're going to be as a person, वो बहुत important है. Are you stable here? That will change everything in your life. Are you stable to understand the emotions that you're going through? That will clearly make you a better person, that will clearly make you a better partner, टीममेट, कलीग, बॉस, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको खुद को कैसे डील करना है। जब आपको ये पता होता है कि आपको खुद को कैसे डील करना है, तो आसपास के लोगों को तो आप ऑटोमेटिकली डील कर लेते हो। दैट्स वेरी इजी ना, क्योंकि द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग विद इन अस। दैट्स क्रक्स ऑफ इट, वी डोंट अंडरस्टैंड। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न आपको लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, आई लाइक टू स्टे अलोन इन अ रूम, इन अ कॉर्नर, आई जस्ट वांट टू बी देयर। ऑब्वियसली ये सब चीजें आज सोशल मीडिया की वजह से भी हो रही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कंज्यूम करने के लिए, तो हमें लगता नहीं है कि हमें लोगों में होना चाहिए। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। वी नीड पीपल इन आवर लाइफ. We need social connections. Social media connection is also good, but social connection is very important.
Because when you talk to people, when you be with people, you change energies. When you talk to a positive person, you get the vibe. Now if you're listening to me, and if I believe most of you are not asleep yet, so if you're listening to me, you might be feeling, okay, yeah, I can do that, I also can do that, I also can do that. We all think that, and we all definitely can do whatever we are talking. Is more opportunity one way. I just want to read the comments, right? How to control other emotions to harm oneself. So yeah, कंट्रोल अदर्स इमोशन टू हार्म oneself. ओके, सबसे पहले हम इस बारे में अगर हम बात करें कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, बट अगर अगर आप समझना चाहते हो, इफ यू आर समथिंग हु समवन हु वांट्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड बी अ पर्सन हु जो अपने लिए कुछ करना चाहता है, यू डोंट वांट टू बी अ स्पीकर लाइक मी और यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, दैट्स perfectly fine. You need not to do everything for the world, right? We do a lot of things for ourselves also. तो अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ हार्म करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपको कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लगता है आपको, विच एवर एज ग्रुप यू आर, मोस्टली अगर आप 17 to 22 के बीच में हो, 16 to 22 आजकल के टाइम पे, तो आपको ये बहुत ज्यादा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको तो कुछ समझ नहीं है सोसाइटी का, दुनिया कितनी फास्ट हो गई है, क्या फास्ट फैशन हो गया है, सब कुछ ऐसा हो गया है, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड अस, राइट? ये हमें लगता है. दूसरा हमें लगता है मेरे फ्रेंड्स बहुत फेक है, आई डोंट हैव पीपल हु रियली लव मी, हु रियली ट्रस्ट मी. एंड तीसरा हमें लगता है कि whatever your life partners you know, whatever partners that you have, you feel that those should be your center of point, those are the person who should be your everything, and you are not everything to them. and इसी बारे में हम अपने आप को नीचे गिराते रहते हैं. These are the main points that I believe most of this generation has the problem with. ऑब्वियसली सक्सेस कैसे होना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे डील करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट majority of people are just concerned about people around them, उनकी फैमिली, उनके पार्टनर्स, उनके फ्रेंड्स, उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है. एंड एक्चुअल में वो लोग वो हैं जिनको वो सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपनी लाइफ में, राइट? सो एंड देन वी रीच अ स्टेज वेयर वी फील कि नहीं, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, एंड आई वांट टू हार्म माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई डोंट वांट टू यू नो बी अ पर्सन एनी मोर, आई डोंट वांट टू बी हियर. बट एट दैट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, दोज पीपल जिनको आप कह रहे हो कि वो आपको नहीं समझ रहे हैं, वो इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, किसी इंसान की कोई गलती नहीं है. Not your parents, not your friends, not your colleagues, not your spouses, anyone, किसी की कोई गलती नहीं है. It's the problem is कि आप खुद को नहीं समझ रहे हो, आप अपने आप से कुछ और चाह रहे हो जो आप हो ही नहीं. You're expecting yourself to be a, अगर मान लीजिए एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, राइट, समवन हु डोंट लाइक टू गो आउट, एंड एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, और दोनों साथ होते हैं, इफ दे आर फ्रेंड्स बेसिकली, एंड द अदर पर्सन इज ऑलवेज पुशिंग देम कि चलो चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, एंड द अदर पर्सन इज डूइंग दैट फॉर हिम, द इंट्रोवर्ट पर्सन इज डूइंग दैट एंड डूइंग एवरीथिंग. आफ्टर अ टाइम ही फील्स कि आई एम नॉट दिस पर्सन, मैं नहीं हूँ ये जो बाहर जाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमना. एंड देन ही इज लाइक कि नहीं, मेरे दोस्त मुझे हार्म कर रहे हैं, मुझे मतलब कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं. देन एट दैट स्टेज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट योर फ्रेंड्स who are pushing you, they are only pushing you because this is what they are extrovert, and they are telling you कि चलो चलते हैं, because that's normal for them, it's their reality. But for you as an introvert, it's your reality that you have to accept the fact कि हाँ मैं हूँ. आपको खुद को गिल्टी महसूस नहीं करना है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरे में ही कुछ गलती है कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ. इट्स नॉट अबाउट दैट. प्रॉब्लम इज वो अपने आप को एक्सट्रोवर्ट मानते हैं, और वो अपने लिए वो चीजें कर रहे हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट लोग घूमते हैं, अपने दोस्तों में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं. सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इट्स यू हु इज डूइंग रॉन्ग बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग हु यू नॉट. तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आप जो भी हो, आपको जो भी लगता है, कुछ भी, देर आर नो फाउंडेशन इन दिस वर्ल्ड एनीमोर अनलेस यू वांट टू किल समवन. उसके अलावा देर आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आर फाउंडेशन. लोग बोलते हैं आपको, लोग बोलेंगे आपने ये गलत किया, ये गलत किया, वो किया, आपने कुछ भी किया, आपने मार्क्स अच्छे नहीं लाए, आपने करियर अच्छा नहीं बनाया, आपने कुछ ऐसी क्रिएटिव जॉब में चले गए आप जो आपके कम पे कर रही है, बट यू नो यू वांट टू डू इट, बट लोग बोलेंगे क्या बेवकूफी है ये, तुम तो इंजीनियर थे, तुम क्यों राइटर बन गए, why do you are doing that? So it's not that ये सब होगा आपके साथ, but that doesn't mean you have the right to kill yourself. You can't commit suicide and anything, because
यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और दुनिया नहीं भी समझेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले खुद समझो ना, खुद अपने आप को बदलो, चेंज योरसेल्फ। अपने आप को अपने बारे में बताओ कि मैं ये हूँ, I want to do this, I want to be this, I want to do this, I want to change this in my life. I want make yourself the center of your life. You're not the center of your life at all now. Everyone around you is the center of your life, and then you say I'm very sad, and then you say I don't know what to do with my life, no one is with me. Obviously no one is with you because yourself not with you. You have to be with yourself, you have to accept the fact. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे ना, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन यू नो कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, and then you won't be able to harm yourself because you know that you're not doing something wrong, because you're just being yourself. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसे बदलने की कोशिश नहीं, बदलने की मतलब अपने लिए अपनी चीजें जो आप करना चाहते हो उसके लिए बदलने की कोशिश, खुद को बदलने की कोशिश नहीं। आपको जो चाहिए खुद के लिए उसके लिए चीजों को बदलना है। खुद को बदलना इज नॉट, हमें लोग बोलते हैं, हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे एवरीवेयर, चेंज योरसेल्फ, बी दिस बी दैट बी XYZ। That's not the reality. You have to change things around you, your habits and blah 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 stuff, so you can be the person you want to be. You want to be Abhishek, that's why you want to get up early, because you believe, you close your eyes and just imagine that you are this ideal person. अपने आप को एक आइडियल पर्सन की तरह इमेजिन करो कि ये एक परफेक्ट अंकिता, गार्गी, आशीष, अंजलि होंगे, राइट? सो जस्ट इमेजिन योरसेल्फ नाउ. Close your eyes, guys, if you can. I'm not even seeing your eyes, but I'm just trusting you all that you're doing that. So yeah, now imagine the perfect self of yours, perfectly amazing, like every aspect ke hisab se. See what is there, what is missing in that. Now open your eyes and see what is missing. Maybe it could be your studies, maybe something related to your physical appearance, maybe something related to your physical health, maybe something related to your mental health, maybe something related to your family, right? Now when you talk about the family part, family is after you. You have to be the first person to take control. अब जो आपको लगता है, जो चीजें आप में हैं, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे I see a person who is very fit. Personally, मेरे केस में अगर मैं बात करूं, if I close my eyes and imagine, I see a very fit and a girl jumping here and there and all like that. तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to inculcate habits जो मुझे fit करे ताकि मैं वो सब चीजें कर सकूं, right? I'm not changing myself. I'm doing things to be myself actually. जो मेरी इमेजिनेशन है, जो मैं खुद को चाहती हूँ, उसको करने के लिए मुझे अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। अब वो फिटनेस के लिए हो सकती है, मेरी मेंटल स्टेट के लिए हो सकती है, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग दैट आई वांट टू बी। राइट डाउन दोस थिंग्स that okay, I want a fitter Abhishek, I want a fitter Gagi, I want anything, right? I want to do this. तो आप उन चीजों को लिखिए, write it down and then work on it. एक दिन नहीं करिए, 2 दिन नहीं करिए, do it. अगर 4 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि I want this result and I am closing my eyes and I have something different, मुझे कुछ और दिख रहा है, then write those things also. You can be anything in this world, anything. You can be writer, producer, director, everything at the same time. You need not to be one person. You don't have to choose anymore. The world is so much capable of giving you all of the things that you can be anything. तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप 4 दिन बाद कुछ और देख रहे हो, add that into your list. Be that thing into your life. Add that thing to your life. जब आप ये चीजें करोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके पास टाइम कम होगा सोचने का, आपके पास टाइम कम होगा उन चीजों के बारे में बात करने का जो आपको बात कर रही है, आपके पास टाइम कम होगा अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स देखने का। जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हो ना, तो आप उनसे दूर होने लग जाते हो। You see a lot of faults in them and then you are like, नहीं, I don't want to be with this person, I don't want to be with the XYZ. जब आप अपने आप में सेटिस्फाइड होगे, तब आप एक दिन अपने दोस्त को मिलोगे हफ्ते में ना, अगर आप रोज भी मिल रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप देखोगे कि हाउ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, हाउ चेंज्ड यू आर। आपको लोग नहीं बोलेंगे कि आप बदल गए हो, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बट आप अपने आप को देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ बदल गया है। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू हियर, दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। और वो सब यहाँ से बदलेगा। ऑब्वियसली आप फिजिकल फिटनेस पे काम करोगे तो आपकी बॉडी भी चेंज होगी, बट द पॉइंट इज द अप्रोच दैट यू आर चेंजिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ,
is what that matters, right? And that is what it is. सेल्फ हार्म हम तब करते हैं जब हम अपने आप को एकदम दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं. हमें लगता है कि अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हमारे पास ना, हमने हमने 10th का एग्जाम पास नहीं किया, हमने 10th के एग्जाम में हमने बोला था हम 99% लाएंगे, हमारे तो आ ही नहीं रहे हैं. अब हम अपने घर वालों को कैसे अपनी मतलब फेस करेंगे? हाउ विल वी फेस देम? हाउ आर वी गोना डू दैट, राइट? इट्स नॉट अबाउट दैट. डू यू सी योरसेल्फ कि आपको लगता है कि आपके आज के टाइम में, आई एम क्लियरली टॉकिंग अबाउट राइट रीसेंट टाइम्स एंड कमिंग टाइम, आज के टाइम में डू यू रियली थिंक आपके 10th के मार्क्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में? क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन बी एनीथिंग. तो ना अपने नंबर्स पे जाओ, ना अपनी किसी और चीज पे जाओ. Nothing in this world is going to impact you unless you have the habit to change yourself, change your habits basically. Unless you have the habit of changing your habits and be someone you want to be. Hardly matters कि आपको क्या करना है. आपके घर वाले बुरा मानेंगे obviously, because जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि उनके पास ये सब था ही नहीं, ये सराउंडिंग्स ही नहीं थी. उनको थोड़ी पता था कि ऐसे हो सकता है कि घर बैठ के भी पैसे कमाते हैं. दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ. जितना आप डील कर रहे हो ना उससे ज्यादा, क्योंकि आप तो एटलीस्ट उस सर्कल के बीच में हो ना, सो दिस लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन विद यू. बट फॉर द पीपल हु आर आउट ऑफ दैट सर्कल, दे थिंक कि हो क्या रही है, घूम क्यों रहे हैं, व्हाई द वर्ल्ड इज लाइक यू नो रिवॉल्विंग लाइक दैट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सो डोंट टेल देम कि आप हमें समझ नहीं रहे हो, बिकॉज वो भी नहीं समझ रहे हैं. देयर आर दीज जनरेशन, उन्होंने अपनी पूरी पूरी लाइफ निकाल दी और उनको अपने बारे में चीजें नहीं पता है. We don't want to be that generation. That's why you guys are here. I know you want to change that about yourself. You want to know about yourself. तो आपको बस अब करना क्या है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना है. वो कैसे दोगे? If something is bothering you, talk it out. Talk it out with your friend. अगर आपका फ्रेंड नहीं सुन रहा है तो talk it out with some stranger. Anyone who is like you feel कि मेरी बात सुनेगा, talk to them, tell them. It's fine. No one's going to use anything against you because hardly matters. And trust me, 99.9% टाइम वो बातें इतनी छोटी होती हैं कि वो आपके दिमाग में बस अटक जाती हैं. बट अगर आप उनके बारे में बात करके उनको व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट इट एंड इट विल बी गॉन फ्रॉम यू, एंड आपको मेंटल हेल्थ को वो इम्पैक्ट नहीं करेगी. एंड वो बहुत बड़ी बातें होती नहीं है. कई बार बस हमें किसी ने ऐसे डांट दिया, किसी ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरी तरफ ऐसे मुंह बना दिया. ऑल दो स्मॉलेस्ट, अगर हम उनके बारे में बात नहीं करोगे, दोस्त कीप ऑन पाइलिंग एंड यू रीच अ पॉइंट जहां आपको डिप्रेशन होने लगता है, आप सिवियरली एंजाइटी फील करते हो, आपको रात को नींद नहीं आती है, you feel a lot of high blood pressure issues, a lot of things. तो हमें वो नहीं करना है. We have to talk about our problems. If you're feeling that you're not feeling right, talk to your parents, tell them I'm not feeling right, I have something that I want to find out. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या है, but I want to. They will tell you कि कुछ नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, you're doing everything, your marks भी बहुत अच्छा है, क्या करना है, कुछ नहीं है, सब sorted है. But you are the person who's going to tell them, नहीं मुझे कुछ दिक्कत है, I want to sort that out, because you know that you are feeling it. Don't ignore that feeling, because they don't know what's happening and they are not the culprits. उनको एक दुश्मन की तरह मत देखिए कि वो समझ नहीं रहे हैं, कैसे लोग हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं, सारी दुनिया को समझ आता है, इनको क्यों नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है, and we want to explain it to them. You are the person, you have the power to change it. You want to explain to them. Don't fight with them. You tell them that okay, there's something bothering me, I really want to solve it. Go to a doctor, go to someone, even if you can't go to a psychologist or psychiatrist in your place, you just have online access. आजकल 50 200 रुपए में doctors are easily accessing you over email, over online platforms. There's a lot of information available. There are so many platforms जहाँ लोग mental health के बारे में बात करते हैं, जो बहुत सारे solutions आपको देते हैं, छोटे मोटे solutions जो आपके लाइफ में चेंज ला सकते हैं. अगर आप अर्ली स्टेजेस ऑफ मेंटल हेल्थ में, मतलब छोटी मोटी अगर आपको अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है एंड यू फील लाइक देयर समथिंग बॉदरिंग, देन देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन इवन. तो आपको वो सब करना है, आपको पर एक्सेप्ट करना है और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है. कोई आपको मना करे कि आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको नहीं है कोई प्रॉब्लम, बस लोग बोल रहे हैं इसलिए. और एक और बात मुझे आपको बतानी है कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमें ना, कई बार हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमें लगता है कि मुझे तो बहुत डिप्रेशन है, मेरे से तो ना पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा है. कई बार क्या होता है, वी हैव दिस हैबिट ऑफ नॉट लर्निंग थिंग्स. हमें लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ता है ना, तो मुझे, मेरे साथ होता था ये बेसिकली, व्हेन आई हैड टू लर्न समथिंग न्यू, आई यूज्ड टू फील कि मेरा दिमाग रुक गया है.
like I've reached in space where everything is stopped. I used to feel like that. जब तक चीजें मेरे समझ के हिसाब से होती थी, I used to be happy. पर जब कोई ऐसी चीज होती थी जो मुझे जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती थी, I used to feel like stuck. तो उसका सिर्फ सोल्यूशन इतना सा था कि आई डिडंट हैड दिस हैबिट ऑफ लर्निंग. मुझे नहीं लगता, मुझे नई चीजें सीखने नहीं आती थी. हमें करना क्या है, जब आप अपने आप को चैलेंज करते रहो, इफ मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका शायद डिप्रेशन होता ही नहीं है, इट्स जस्ट द फीलिंग कि आपको चीजें सीखने की आदत नहीं है. आपको बस क्या करना है, यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ लर्निंग एनीथिंग एवरी डे. कुछ भी छोटा सा एक चीज सीखो, कुछ भी वीडियो देखो कि अच्छा ये कैसे होता है, आई विल वॉच इट. कोई हजारों कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, वॉच दोस कोर्सेज. और फ्री में अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू पे अ पेनी. वही इंटरनेट जो आपको 1.5 GB आप इंस्टाग्राम रील पे खर्च करोगे, वो आप वहां पे लगाओ. पूरा मत लगाओ, हैव योर चिल टाइम एंड एवरीथिंग, डू दैट, बट give 20 minutes every day to learn something. It could be any sport, it could be any activity, it could be anything. Dance सीखो, कुछ भी सीखो. Just keep your mind running in the right direction to learn something, and that will really change your life. That will really give you the habit of learning things, and आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जर्नलिंग की आदत डालनी है. आपको अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है, यू राइट इट डाउन. हमें क्या होता है, हमें बहुत सारा, कई बार हमें लगता है कि हम किससे बात करें, कोई है ही नहीं, हम नहीं बात कर सकते. देयर आर सम पॉइंट्स दैट वी आर अशेम्ड ऑफ टॉकिंग. हमें लगता है कि हम इसके बारे में नहीं बात कर सकते. दैट्स द फीलिंग दैट वी आर हैविंग. राइट इट डाउन अंटिल यू स्टॉप फीलिंग अबाउट इट. आप, पता नहीं, हमारे दिमाग इज लाइक अ मशीनरी विच कैन नॉट थिंक एंड राइट टुगेदर. इट्स नॉट लाइक दैट. आप दूसरी चीज के बारे में सोच नहीं सकते. अगर आप, मैं एक टॉपिक पे सोच रही हूँ और मैं उस टॉपिक के बारे में लिख रही हूँ तो इट्स फाइन, बट अगर मैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में सोच रही हूँ, मैं किसी और चीज के बारे में लिख रही हूँ, यू कांट डू दैट. Our brain is not trained like that. We have to think about the same thing and then write about it. So basically, जब आप उस चीज के बारे में, आपके दिमाग में होगा कोई थॉट, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी. यू विल राइट अबाउट दैट थिंग. यू हैव टू राइट अबाउट दैट थिंग. जब तक आप उसको लिखोगे, आप अपने सिस्टम से उससे बाहर निकालोगे, यू विल फील लॉट बेटर. आपको लगेगा कि कुछ कुछ सॉर्ट हो गया है. पहले दिन नहीं लगेगा. ट्राई इट फॉर सम टाइम, यू विल सी द चेंज इनटू इटसेल्फ. और आपको ये छोटी बहुत छोटी आदतें हैं, ये हमें बहुत मुश्किल लगेंगी करने में. अभी के लिए बहुत ईजी है, मैं बोल दूं आप लिख लेते, आप बोलोगे हाँ हम लिख लेंगे. बट द पॉइंट इज, एवरी डे जब आप कुछ बॉदर कर रही है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे ऐसे देख के हम उसको वापस सोचते रहे, ओवर थिंक करते रहे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हमें वो नहीं करना है. वी हैव टू टेक अ नोटबुक, राइट इट डाउन कि अच्छा तुम मुझे बॉदर कर रही थी, लो तुम्हें लिख दिया. तुम मुझे बॉदर कर रहे थे, ये भी लिख दिया. देन यू विल सी दैट यू सॉर्टेड योर थिंग्स. यू नो व्हाट्स बॉदरिंग यू ना. देन यू विल रियलाइज, जब आप उनको लिखे हो, दोबारा पढ़ोगे ना, देन यू विल थिंक कि अरे ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ये इसको तो ऐसे कर सकते हैं. व्हेन यू राइट इट डाउन, योर माइंड विल स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर टू द सेम प्रॉब्लम्स. Your mind is such a great machine that it can find answer to anything in this world. Anything. Everything you see around yourself is created by this mind. Not mine, but everyone's. So you have to just do that. You always have to write it down and then look at that कि ये क्यों हो रहा है. Then you will find the answer to that. And slow, कुछ चीजों का अगर आज आंसर नहीं मिल रहा, कभी जरूर मिलेगा. Just keep doing that. Just keep this practice into yourself कि आपको लिखना है प्रॉब्लम्स को. And अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सॉर्टेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस. देन ऑल्सो यू कैन डू सच थिंग्स, बिकॉज ये आपके लिए लाइफ को कंट्रोल में लाने के लिए, आपकी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए, ये सब जो हमने बात करी है, इट्स नॉट ओनली फॉर द पीपल जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है. इट इज फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ, हु वांट टू कंट्रोल देयर लाइफ, हु वांट टू नो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है. It's not about being an astronaut or anything. It's just about being who you are. You have to find that. ना हमें बहुत टाइम लग जाता है. I'm 28 now, so I didn't know what I want in my life till last 4 years maybe. मुझे नहीं पता था till the age of 25 or 24 that who I am and what I want to be. I was just chasing different dreams. ये करना है, वो करना है, blah blah blah. There was a lot of things, right? So all you have to do is, all of you deserve to know who you are at the very young age, because बहुत precious years हैं. Our life expectancy is also decreasing. We have to utilize every year that we have, right? So all of you need to know what you are. So just focus on your mental health. क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को जानोगे, आप अपने solutions ढूंढ पाओगे. And when you know the solutions to yourself, everything around you will be solved very easily.
हर एक प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. ओनली बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट जस्ट डिफाई, आप डिफीट नहीं कर सकते हो डेथ को, losing someone and all that. All those things will make you and break you, but प्रॉब्लम इज आपको अगर अपने आप से डील करना आता है तो आप हर एक चीज से बाहर निकल सकते हो, एंड यू विल बी द पर्सन हु इज गोना चेंज द वर्ल्ड समडे. I hope you will, try to inculcate all these things in your life. And if you have any questions related to any of your mental health, please, I know I was speaking so much. I think I've bored a lot of you, but let's, wrap it up with questions from you. If you have any question, just turn on your camera and send this question. I would love to answer those questions. Thank you. Thank you, ma'am. What a wonderful knowledge given by you, ma'am. I hope our audience learned many new things from this session. Once again, I would like to thank you for joining us and sharing your experience, your precious time and knowledge with us. No problem. Ma'am, there are few questions which our audience wants to be answered. So, Yes. with your permission, shall we? So, Yeah, the please first go on. question is. Okay. And the first question is, what causes mental health disorders? Okay. Mental health disorders can be from any of the issues that we don't know even. हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें कब और किस वजह से. Do you know how you get fever? आपको पता है कि आपको फीवर कैसे होता है? नहीं पता ना. It doesn't matter like that. क्योंकि हम कुछ चीजें ऐसी होती है, जब हमें कोई वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उसको फाइट करती है, एक टाइम तक फाइट करती है, बट आफ्टर अ टाइम बीइंग वो उससे अगर नहीं कर पाती है तो दैट द कोपिंग मैकेनिज्म इज फीवर. बेसिकली फीवर इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. सिमिलरली जब हम हमारा ब्रेन वर्क्स ऑन इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन. जब आप उसमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाइल ऑन करते रहते हो, बट यू डोंट सॉर्ट इट आउट, you don't find the solutions to most of the problem and you keep putting it in your head. तो क्या होता है, अब आपका ब्रेन कैसे क्या करेगा? तो the mental health disorders are actually because of the coping mechanism of your brain कि आप रुको, आप इसको ठीक करो. what's happening to it? You solve this information, you find out what's happening to you. That is mental health disorder. और ये कैसे भी हो सकता है, आपकी कंडीशन, चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से होता है कि आपने बचपन में कुछ चीजें अपने दिमाग में रख ली, तो जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, आप क्योंकि आप बच्चे थे और आपने अपने सराउंडिंग्स को देख के जो अपने दिमाग में फीड किया, you held on to it, and आप आज भी उनसे सफर कर रहे हैं. It could be anything, your peer pressure. आप कॉलेज में हैं, आप बहुत सारे दोस्तों को देखते हैं जो आपसे बहुत अलग दिखते हैं, अलग तरीके के हैं, बहुत अलग अलग चीजें होती है, तो आप कंटिन्यूअसली अपने आप को एक अंडर प्रेशर रखते हो कि मुझे ये नहीं कर, मुझे ऐसा होना है, ऐसा है ना, एंड देन योर माइंड गेट पजल्ड कि होना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी, राइट? तो उसकी वजह से भी आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं. कंटिन्यूअस आपकी स्लीपिंग इश्यूज, स्लीपिंग पैटर्न्स की सही ना होने से भी आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब होने से भी हो सकते हैं, एंड फिजिकल फिटनेस की वजह से भी, अगर आप फिजिकली ओबेस हैं तो भी आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं. यू कैन फील डिप्रेस्ड बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू दैट वेट दैट यू कैरिंग, क्योंकि हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा उससे प्रेशर पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. अगर आप नहीं हैं फिजिकली फिट तो भी आप मेंटली डिसऑर्डर. कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी बोला जाता है कि अगर आप मेंटली इल फील कर रहे हैं तो बिकॉज यू आर ओबीस, एंड दैट कुड बी लाइक 50% ऑफ द पीपल का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि फिजिकली फिट हो जाए, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है. So that could be the reason. So all you have to do is find. I have another question. Yes. That what kind of lifestyle changes can help with my symptoms of mental health disorder? What kind of lifestyle changes can help with my symptoms of mental health disorder? Depends on the symptoms. Basically, first of all, your symptoms could be anything and from everything. If you can like the person is in there in the chat. Do we have the person? No, ma'am. Okay, no problem. So basically the symptoms vary from situation to situation. तो उसमें क्या होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि physical fitness is something that can actually change irrespective आपका क्या mental health disorder है. Obviously you can't heal completely, but in most cases, in 50% of cases, you can heal after being a physically fit person. और physically fit का person से मेरा मतलब सिर्फ gym करने से नहीं होता, सिर्फ your brain is somewhere else and you're just working out. That's not it.
you have to work out here also. आपको अपने mind को work out करना पड़ेगा along with your body, because your mind is a part of your body, right? We often ignore it. हमें लगता है कि बस हमने डंबल्स उठा लिए एंड वी आर फिट. आपका दिमाग वैसा का वैसा था जैसे आपने योगा या जो भी आपने प्रैक्टिस शुरू करी उससे पहले अगर आपका माइंड वैसा था और उसके बाद भी अगर डिट्टो वैसा है, देन यू डिडंट वर्क आउट बेसिकली. योर माइंड हैज टू देयर, यू हैव टू वर्क आउट हियर आल्सो. सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट व्हाइल यू आर वर्किंग आउट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, आपको सिर्फ करने के लिए नहीं करना है वो. सो डू समथिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ, दैट इज मेडिटेशन. यू कैन ट्राई, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट शुरू में, बट आप सिर्फ साइलेंटली बैठो 10 मिनट, कुछ मत करो. आई नो योर माइंड विल गो हियर एंड देयर ऑल दैट, बट डोंट मूव एट ऑल. डू दैट. दैट विल आल्सो गिव यू सो मच एनर्जी एंड सो मच चेंज इन योर लाइफ दैट यू कैन इवन इमेजिन. मेडिटेशन आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बट जरूरी नहीं है आपको कि पहले ही दिन आपको मेडिटेशन करना है. जस्ट सिट विद क्लोज्ड आईज एंड फॉर 10 मिनट्स विदाउट मूविंग इवन योर आईलिड्स. तो वो करो तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा. ये इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या सिम्टम्स है क्या है, ये सब वर्क करेगा. फिजिकली फिट, मेंटली फिट होने के लिए आपको मेडिटेशन या योगा करना चाहिए. एंड यू कैन चेंज योर ईटिंग हैबिट्स. इफ यू ईट अ लॉट ऑफ जंक, यू कैन बी फील, you can also have mental health like disorders. That is what studies say, that हमारा खाना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे दिमाग को. Okay, ma'am. It was very effective for our audience. That was a very good piece of advice. Thank you, ma'am, for answering these questions. No problem. Gagi, there are a few questions in the chat. I'll answer those. Okay. Me. Did I read them? If someone is silent and not sharing anything with anybody but keeps going with the work, at such situation, should he be asked from the somebody of other side about what he is up to? हाँ, अगर कोई अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता, someone feels like कि मुझे नहीं बताना है what I'm going through, but I can see कि आपके साथ कुछ bother हो रहा है, मतलब आप मेरे फ्रेंड हो या कुछ acquaintance हो, आई वांट टू सी, मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, व्हाट वी कैन डू. एंड वो सामने वाला आपको कुछ बता भी नहीं रहा बिकॉज दे डोंट वांट टू शेयर इट विद, बिकॉज दे डोंट. प्रॉब्लम क्या होता है, 99% उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है. They're just figuring out things. And अब वो दूसरों को क्या बताएं. अब मुझे ही नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, right? I don't even know. So in such situation, all you can do is just tell them that even if there's something bothering you, don't worry. You can talk to me. I'm here, and we will try to find the solution to it. These smallest words can change the world for someone. वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. यू आर लाइक ओके, कभी अगर तुम्हें कुछ लगे, आई एम हियर, यू कैन टॉक टू मी, दैट्स इट. Something like that is very effective. And even just be there for them and don't push them for things like you know कि ये इनको bother कर रही है. कोई चीज कई बार हम ऐसे करते हैं, हमें लगता है कि सामने वाले को क्या फर्क, हमें नहीं फर्क पड़ रहा उससे, तो हमें लगता है सामने वाले को भी नहीं पड़ेगा. बट हम सब अलग अलग इंसान हैं, हर किसी को अलग अलग चीजें इम्पैक्ट करती हैं. सो डोंट पुश पीपल. अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाले को कुछ बॉदर कर रहा है, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज ऑल वी वांट टू डू इज वी वांट टू हेल्प दैट पर्सन टू गेट आउट ऑफ व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू, राइट? सो डोंट पुश देम ऑन दोस थिंग्स कि मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाने से दिक्कत हो रही है, आई डोंट वांट टू पुश यू कि तुम चलो 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 ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. यू टेल देम कि यू डोंट वांट टू गो, बी हियर, सिट हियर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड if you want to go, let me know, I will go with you. So that change is something that you have to acknowledge, and that is the change that really, that is something you can do if you are with the person who is suffering from depression or mental health. Most of the time हम नहीं कर रहे होते, हमारे साथ वाले लोग कर रहे होते हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा था हम डील कैसे करें इससे. लाइक क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम कैसे उसको बोलेंगे. उसको ये थोड़ी बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा, सॉर्टेड है, ऑल डन. You can't say that because it feels like कि तुम्हें कुछ समझ तो आ नहीं रहा है and you're just saying all good, right? It's not like that. All you can tell them is कि we will find a solution to it. We will find a solution, and just be there for that person. Don't push your expectation onto them because already उनके पास बहुत सारा baggage है जिसकी वजह से वो struggle कर रहे हैं. So try to be a understanding person at that time, and that is the best you can do. That is it. And the next question is, Professor, is more opportunity one way the rising factor for mental health is for more opportunity? Yes, Sujata ji, really you really said it rightly. क्या होता है ना, आज मैं कुछ और कर रही हूँ, कल मुझे लगता है कि गार्गी कुछ और कर रही है, आई थिंक मैं भी तो कर सकती हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, आई स्टार्ट डूइंग दैट. बट 3 दिन बाद मुझे लगता है कि अभिषेक कुछ कर रहा है, आई वांट टू डू दैट. तो
लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज कॉज्ड दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज. नहीं तो 17 18 19 20 तक हम लोगों को नहीं पता होता था कि क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है. हमें बिल्कुल नहीं पता होता था. क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती था. हमारे वो कॉलेज के 10 दोस्त, उन्हीं में हम मस्त थे. वो कैंटीन की चाय, खाना पीना, उसमें हमारी जिंदगी निकल जाती थी, हमें पता भी नहीं होता था. बट अभी क्या हो रहा है, हम वो सब भी कर रहे हैं, बट अदर देन दैट वी आर ऑल्सो sorry, we are also dealing with a lot of information outside the world, right? We are getting a lot of information throughout the world. तो हम उसकी वजह से भी हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है. तो अगर आपको चाहिए कि आप अपने आप को सॉर्टेड रखो, तो गिव योरसेल्फ ये डिजिटल डिटॉक्स जिसको हम बोलते हैं, हफ्ते में या कभी भी. हम लोग को क्या लगता है कि हम हर चीज को एक्सट्रीम पे करेंगे तो ही सोल्यूशन. इट्स नॉट लाइक दैट. आप अपने फोन को 24 घंटे अपने पास रखते हो, बट अगर आप बीच में अगर 10 मिनट भी उसको छोड़ के कुछ किचन में करने लग जाओ या कहीं दोस्त के पास चले जाओ, ट्राई टू डू दोस थिंग्स. छोटी छोटी चीजें करो. आई डोंट वांट यू टू चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली. बहुत बड़े तरीके से. ऐसा नहीं कि तुम 3 दिन तक फोन ही मत देखो, राइट? यू डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट वांट यू टू डू दैट. आप छोटी छोटी चीजें करो, छोटी छोटी चीजों से चेंजेस लाओ, एंड देन यू विल सी कि हाँ, आई एम डूइंग बेटर देन आई वाज डूइंग अर्लियर. और हर चीज का सोल्यूशन बहुत जल्दी नहीं मिलता है. ऑल यू हैव टू डू इज गो स्लोली. थोड़ा 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 अगर हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, दैट इज इनफ ऑल्सो. There might be some network issue with the speaker. I request audience to please wait for her to join again.
Can you see me? Yeah, perfect. So I was answering Abhishek's question. Is it that are we supposed to be kind or truthful, right? But the biggest thing that I want to tell you, Abhishek, is that we have to be kind, irrespective of what's happening in the world. You know, because we are not being kind for someone else. हम लोगों के लिए नहीं हो रहे हैं. I'm not being kind to you or for Gagi or for anyone else. Being kind for myself. I don't want to be a person who regrets it later. Ki shit, I did said that to that person. Why did I do that? I'm doing that for myself. Truth is something that is said. अगर आपको लगता है कि सिचुएशन में ट्रूथ बहुत जरूरी है, I have to be true because it's someone's life or it's someone's, a lot of things that's changing. Obviously, I don't want to be a cheating person or anything like that. But being kind is very important. जब kind और truthfulness के बीच में बात आती है तो आपको kind होना जरूरी है. क्या पता आपका ट्रूथ किसी को हर्ट कर दे, इन द सेंस कि उसकी जरूरत नहीं थी, बट only because you thought I want to be a truthful person, you want to say it. You need not to say that. Because कुछ चीजों को अगर ना भी आप कहोगे, then also it works. It's fine with that too. But आपको true रहने के ज्यादा जरूरी है kind रहना, because ultimately we are humans and we are driven by emotions. हम emotions से ज्यादा हमें अगर किसी को सच बोल देंगे तो हमें ज्यादा खुशी नहीं होती कि I told him truth. We feel happy because we like someone smiled at us. We we are angry किसी ने हमसे बात नहीं करी पे. हमें गिल्टी तब लगता है जब हमने किसी को हर्ट किया होता है. We don't want to do that. हमें बस kind होना है, and obviously when in situation you can't ignore being that truthful. मतलब आपका verdict है, right? You have to give your verdict. Then obviously you have to be truthful, but otherwise I would choose to be kind irrespective of whatever it is. So I hope you will do that too. If you have anything else, you can ask. Guys, I'm done with it. And thank you for being so patient and so amazing audience. Because this really, I didn't had any presentation or anything because I wanted to talk to you guys one-on-one, because that's what mental health is about. It's not a rocket science or anything that I tell you. It's all about being who we are. Anyone have any questions? Thank you, Dr. Sanjay ji. Thanks a lot for having me here. Now, I would like to request everyone to kindly open their camera for a snapshot. Yeah. Sorry. You such beautiful faces. You could have turned on your camera earlier. I would have spoken a little better. And any one of you have any questions related to mental health, you can reach out to my mental health page on Instagram. I, talk to people on one-on-one on mental health there at the CEO Lives. It's like THECEOLIVES, lives, right? So you can go there and just ask anything related to mental health anytime, because I really want to make this conversation go ahead. I really want people to understand that mental health is a very important topic that we need to talk about. Okay, guys? Thank you for having me, and I'm really grateful to be here. Again, thanking you all for attending today's webinar. And if you have any additional questions, you can contact us by email or telephone. We are happy to provide additional support to you. Feedback link is being already added in the chat box. Please fill this form within 6 hours. Thank you so much for cooperating. So stay connected for us. New learning. I Gargi Bharadwaj. Sorry. Thank you so much for cooperating. So stay connected for us. New learning. I Gargi Bharadwaj. Your host for the day, signing off. Have a wonderful day. Thank you everyone for joining us. Thank you, guys. Bye-bye. Namaste. I've shared the name of the channel on the chat. You can guys look into it. Thank you, guys. Bye-bye. Have a nice day. Keep rocking, guys.